So, JB Mall, my name is Rahul. So, I welcome you all in our Bluebird Foreign Education and Career series. Today, we have our speaker Chakshupal Wankhede. He has completed his BBA from Nagpur University. Now, he is doing his Masters in Food and Packaging Innovation from University of Melbourne, Australia. So, Chakshupal, you can introduce yourself and share your journey with us. Yeah, thank you, Rahul bhai. Hi, JB all of you. My name is Chakshupal Wankhede. I am from Nagpur. I am currently studying my master in food and packaging innovation at the University of Melbourne. So this is my second semester. I just completed my first semester, and the second semester is going on. So I would like to tell you my journey about how just I moved to this, the Australia, about dreaming my educations. So first of all, I'm just starting from my primary educations. I studied 10th from my village. My village name is Bugao. That is approximately 35 kilometer from Nagpur districts. So all my, from first to 10th standards, it's completely I learned through Marathi medium. There is no English medium or semi-English or kind of, the CBSE or kind of things. I just purely learned in the Marathi medium. And then I studied my polytechnic, that is 3-year diploma course from Nagpur. So the diploma course was of printing and printing technology. So after I completed my diploma, I started working in MNC Gujarat. So there is Gujarat, there is, the Silvassa and Dadra Nagar Haveli, which is a union territory of India. So there was a MNC, which is the Paper Product Limited. So I joined it in 2008 and worked until 2010. Then I moved to the Nagpur Sakada newspaper industry, which is a part of printing technology. And then I worked there around 1 year. And beside of that, I was preparing for the competitive exam and all of these things, just to move from the industrial environment to the the government organizations kind of things. So I was preparing for that, and simultaneously I was also studying my bachelor in business administration. So I was just earning, and I was learning also. So both works I was managing that time. And when I remember that in the month of March, so 21st March, I joined India Post, which is a government organizations. And at that time, I was not graduated. So before graduated, I joined the organizations, and from then to till, I'm working with it. So right now, I am here on study leave. So this is my journey. So until here, and so I would like to tell about my parents. So my parents is not well educated or kind of things. They are just learned until 9 to 10 class near about, but they are very strict to us. They are very strict to us that they always feel like their child should grow in a very educational academic manner. So my father always used to tell me that you have to be dream a big or kind of things. And he also started the kind of hitting and all kind of things whenever we are just the avoiding our studies. So that is very good things. So that approach was very strict to us, and I was and my two of my siblings also following the same path. Apart from that, so I would like to tell about the journey, how I pursue this career here. So the Kapil Wankhede, who is my cousin, he was in USA. He was studying his master in economics, finance. So whenever we talk, he was always inspiring me about that there is the lots of chance to you. You are very capable, or you have potentials. So you must at least try for the higher educations.
whatever will be the results, don't worry about that, just make at least try. So when I was trying, means he was in USA, so I was just targeting the USA. So uh, for that, there for my course there was numerous actually universities which are offering the food and packaging courses. So one of the university was there is Michigan State University. So I was I was targeting for the USA. So I started all the applications, all the things. I was just the managing, grabbing here and there, just writing SOP. So preparing for TOEFL, preparing for GRE, all those things. So actually, I am remembering the incidents that just we had a exam of GRE at Mumbai. Just we chose a center at GRE, and before that exam, I just got an email from the University of Michigan State University that my profile is not eligible for their master program because the university has a prerequisite and the requirements for their master program that my bachelor or the student who are coming for doing the master, they should be from bachelor background and it should be from the science. मीन्स बेसिकली अगर कहना चाहे तो वो एक साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए या फूड बैकग्राउंड से होना चाहिए या फिर बीएससी माइक्रोबायोलॉजी काइंड ऑफ थिंग से होना चाहिए. तो एट दैट टाइम मतलब जैसे कि मैंने वो मतलब यूनिवर्सिटी का प्रोफाइल देखा था, यूनिवर्सिटी का एकेडमिक कैलेंडर देखा था, तो उसके हिसाब से आई वाज जस्ट फीलिंग दैट आई एम बेस्ट फुट फॉर दी प्रोग्राम. बट सडनली मतलब उनका जो ईमेल आया मुझे और वहाँ पे जैसे लिखा था कि you are not fit for the program because your undergraduate is from the different background and you are entering into the science background. So that's too strange for me. So it got me a shock, means the all those things I was just preparing and managing for this program, and suddenly I received that kind of email, and which was shocking that I am not eligible for the course. So my suggestions is all of you that from this incident. So whenever you will try for your master or bachelor, so check with university academic courses or your academic team, or if you are not sure with academic team, so just try to make a direct email contact with the program coordinator. So he can best evaluate your profile and he will tell you that whether you are eligible or not eligible. Because when I applied for the MSU, the academic team was telling me that I am eligible. But when my email, the forwarded to the course coordinator, the course coordinator actually replied me that I am not eligible. So make sure when you apply for the your desirable or your dream courses, so just make sure just to check with your university team or the academic or course coordinator. So it will help you, it will not disturb you while you are applying with your career path. So I prepared for GRE, I prepared for TOEFL. So then I introduced that, means after getting the reply from the university, I started to figure out some of the the another universities and other countries who are offering the same courses, because I already have a 3 years of MNC experience and your government working kind of thing. So just I was figuring to try out some other universities which can offer the same courses, and I found the University of Melbourne. One of my friend actually suggested me the courses which is recently launched by the University of Melbourne in 2016. So the university doesn't have a the prerequisite or strict guidelines regarding your bachelor degrees. So they are just asking that you must have at least completed your bachelor degree with 60% weighted average. So I was eligible for that criteria, and then I started my journey for then I started my preparation for the courses. So for these courses in Australia, there is English language requirement, no requirement for GRE. So there is a 3 language for the English language. So first one is TOEFL, IELTS, and PT. So I opt for the PT. So when I
was preparing for the PT. So that time there was a lockdown in India. So I chose 2 times Nagpur PTA centers, but unfortunately that centers was on the जब जब मतलब एग्जाम आती थी, जैसे कि 14 फरवरी को एग्जाम है तो 13 फरवरी को मतलब नोटिफाई कर देते थे कि भाई मतलब ड्यू टू कोविड सिचुएशंस वी आर करंटली नॉट टेकिंग एनी पीटी एग्जाम। तो ऐसे 2 बार हुआ। तो फिर उसके बाद में मैंने फिर गूगल पे फाइंड आउट किया कि मतलब और कौन से इंडिया में सेंटर्स है नज़दीक नज़दीक जहाँ पे अपन पीटी का जो है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो फाइंड किया तो वहाँ पे मुझे मतलब हैदराबाद दिखा जो काफ़ी नज़दीक था। और वहाँ पे फिगर आउट करने के बाद पता चला कि वहाँ पे जो है पीटी के कंटिन्यूस एग्ज़ाम्स हो रहे थे। सो बस वहाँ पे मैंने आई थिंक क्या जून जून 2020 जून 2021 सो आई केव पीटी देयर and then I started my application here. So this is about the PT exam. PT exam is for the eligibility of your understanding, speaking, writing, listening knowledge of the candidate, which is best fit for the here just to when you are here. So they are just checking you are familiar with the English, the writing, speaking, all of those things. Yeah. So this is for the PT. And Rahul bhai, anything I missed? No. Actually, can you tell us why you choose this course? Yeah. Okay, cool. So I previously I told you that I was working with the MNC in Gujarat. So I have the kind of knowledge regarding the printing and packaging. And the packaging, especially if I want to talk about the packaging, so packaging is the emerging field in the global at the global level. So after some kind of research, there is intelligent packaging, there is active packaging, there is a connected packaging. So all these things are the actually increasing very rapidly. So in the future, means with the help of nanotechnology and artificial intelligence, the packaging which we are seeing like of this, I want to say that yeah. So this is for the example. So this is the Pond's moisturizer cream. So it is just the traditional packaging, just whatever the product is inside this, and just we are just appearing is and we are just throwing, but we didn't get any idea regarding what are the contents and kind of things actually. It's just appearing our physically it's appearing the on the label, but it's not actual. Some kind of the ingredients, company's ingredients hidden, and they just did not don't mention on the product. So the use of intelligent active packaging is that they use artificial intelligence, nanotechnology, and based on that they placed sensor, biosensors, indicators, all kind of things under this product. So what will happen? So when you scan, means the QR code, when you scan that QR code with your mobile, so it will give you the exact information regarding when the product is manufactured, what is the expiry date of the product, what are the ingredients actually used in the product. So and nowadays people are more aware about their health, health consciousness, the low use of chemicals, means everyone is actually wondering about to eat organic kind of things, organic foods. So that is the part of the this food and packaging. So this is what exactly on the basis of that I want to pursue my career here. Thank you. So I also want to know that what are the challenges you were facing during your preparation for the masters? What are the sources you use to prepare for PT and all? Yeah, so basically most of the students would be from the or regional background or kind of things. So the same things, I have my educations in Marathi language, so I also faced a lot of difficulties into that. But
in the era where we are living, so there is a abundant sources, means you can use Google, you can use YouTube, you can use all those sources, free coachings and all those things are available here. So when I was preparing for the PT, I just used some of, I consulted with my friends, so who already taken the coaching for the PT, so they actually shared their knowledge that there is abundant sources of PT preparations on YouTube. So just go with that. Just prepare for that. That's enough for your preparation. And I did that one. I didn't actually go for the coaching or classes, all those things. And it is a bit easier than TOEFL and PT, TOEFL and IELTS. So yeah, that's thing. And Yes, yeah, yes, please, sorry. please go forward. And in Australia, in Australia, for the when you're coming here for the education, so there is no strict guideline regarding that you want TOEFL or IELTS. So instead of means PT, IELTS or TOEFL, within 3 English language testing actually skills, you must list at least one. So that's one. So Chakshupal, I want to know that what is the difference between IELTS, PT, and TOEFL, and which our students should choose? Oh, okay. So according to my experience, so PT is fully computer-based exams. IELTS is actually, as I believe, IELTS is offering computer-based and paper-based, and also the TOEFL is also the fully computer-based. So for the TOEFL, there is the same content, the same sections: writing, speaking, listening, and what I missed? Writing, speaking, listening, reading. Reading. Yeah. So each sections is worth of 30 marks, and it has the eligibility criteria to pass the exams around 79, if I'm not wrong there. Yeah. So you have to pass each sections with their harder requirements. We can say that you have to score the minimum score for the each sections. And for the IELTS, same, I think. But in IELTS, I think for speaking section, there would be the in-person things kind of. Yeah, I have not heard, but I heard about that. And for the PT, so the PT is fully computer based. It's based on the artificial intelligence kind of things. They are just, I was just preparing, so I was just moving through that website. So just I realized that it's based on the Okay. analytical. Is there any difference in their difficulty levels that some As I believe that I feel PT is more convenient and more little bit easier than TOEFL and IELTS. But I heard some, the feedback from the PT aspirants who has given, so they feel like that the PT is bit difficult than those one, the two one. So the difference is that everyone has their different perspective and experiences. right? So yeah. Okay. बट मैं तो बोलूंगा कि अगर कोई अगर ऑस्ट्रेलिया आ रहा है तो ही और शी शुड बी गो विथ पीटी. इट टेक्स लेस टाइम, एंड इसका एडवांटेजेस ये है कि आप पीटी अगर आपको कल एग्जाम देना है तो आप आज ही बुक कर सकते हैं अगर सेंटर पे वो सीट्स अवेलेबल होगी तो. बट फॉर TOEFL एंड IELTS यू हैव टू अप्लाई बिफोर, अराउंड 15 days or 1 month before. Or I think I believe that there is a 12 chances for, means there is a 12 chances in a year for the TOEFL, but in the PT you have unlimited chances. You can take exam whatever if you didn't get your desired course until that. रिजल्ट कितने दिनों में आ जाता है इसका, कुछ आइडिया? या वेरी गुड क्वेश्चंस. रिजल्ट तो इतना मतलब ये है कि जैसे as I just I gave my PT from 12 to 3, 12 p.m. to 3 p.m. and I received my score for PT in 3:30. Within a half an hour I received score. Yeah,
That's very fast. That's very fast. Yeah. So Great. it is very quick. It is very quick. Yeah. So And the fees are same. Fees are same for both PT, TOEFL, IELTS. okay. So now we can take questions from our students. Yeah. So please, if you have any question and queries, you can raise your hand or you can type in a chat box so I can read your question and Chakshupal can give you their questions answers. Those questions answers. अगर आपका कोई सवाल है तो या तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो अपना हैंड रेज कीजिए। मैं अगर आप हैंड रेज करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप अपना क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सो ओके, हाँ, so Yeah. we have a question in our chat box. Vicky is asking, all universities are except PTE in Australia. Yeah. As I believe, all the universities in Australia is accepting PT course because PT is introduced by the Australian government. That's why. So they have to make it. They don't have any options. They don't have any choice. Even I just went through the internet, so I just heard that some of the universities in UK, they are also accepting the PT, and some of the courses in Canada are also accepting the PT score, but not not in major. They are just few. Okay, I think Shanu has a question. Shanu, you can unmute yourself and ask your question. Hi. Actually, I just wanted to ask you, like, which kind of material we need to use for further studies for IELTS and TOEFL or for PT. So, can you please briefly introduce regarding this? Yeah, sure. Thank you, Shanu, for asking. So for the PT, especially I will talk about the PT and then we'll go to the TOEFL and IELTS. So if you searched on the YouTube for PT, so there is a PT Gold YouTube channel. There is a official channel of PT. Just let me. And there is also some of the the tutors are also available on YouTube, which are offering free PT practices and free practices sessions there. So you just directly go to the YouTube, just start searching PT preparations, and you will find their number of sources. So you can pick them randomly, means what sections you have to start early, what sections you have to start for the preparation. So you can just go with the reading, you can just go with the speaking, you just can go with the listening and speaking. So whatever sections you have to start, just go through that, just watch. So I will suggest firstly, don't prepare for the exam when you started preparations. So first just analyze the content of the exam. So what is the speaking sections in PT, what is the reading section in PT. So just that. So firstly just watch video firstly, what will be the questions, how to tackle it. So just watch randomly thoroughly for first 2 days, then you will familiarize with that. The same strategy I followed. I just started looking for the PT's content, just like speaking, reading, listening and writing. For 1 and 2 days I was just watching, nothing I was doing, I was not preparing. And then I realized, after some time your mind actually grabbing that contents, that yeah, this is the content actually we have to prepare for the writing, we have to prepare for the speaking and all of these things. Then you start for the making the notes, making the content or kind of things. So this is the strategy which I applied for my preparations. And for IELTS, if you're talking, Shanu, sorry if I misspelled your name then. So there is sources available online, just like Makka IELTS sources are there. There are Cambridge sources are free of cost, or otherwise I have also that PDF version if you want it. So I will share with you definitely. No worries regarding that.
Okay, thank you, Chakshupal. We have a question in our chat books from Yeah, Simil. is there any cutoff for PT? Yeah, definitely, Sanket. There is a requirement for the PT. So the cutoff is 59 overall, and you have to pass every sections of the PT. So the basically the PT exam would be 90 marks, and you have to score minimum 59 marks. Okay, we have And one more. Okay, yeah, yeah, yes. Go ahead. yeah, and for cutoff, Sanket, don't worry about that cutoff. If you prepared well, so you will easily, the scope more beyond the cutoff. Okay, so we have a question from Simali. She's asking how to apply for scholarship. So she's asking about scholarship. Which scholarship you? Yeah, so basically the government of India, government of Maharashtra are sponsoring the scholarship for the various communities, just like that, scheduled caste, scheduled tribes, other backward classes, and for open category also. So they have their rosters for opening their recruitment. So basically for the, if I'm talking about the NSS, so the first round of NSS would open nearby Feb or March March starting. Yeah, and for the government of Maharashtra, generally the notification is roll out in the month of May ending. Yeah, and it would be the one time in a year, and the roster for the NSS recruitment, it would based on the the first round will be open, then how many applicant apply for the sponsorships and how many selected into that, and based on that how many vacancies are remain, and based on that they the further round will open for the student. Okay, anyone else have any question or queries? Please ask. So, Chakshupal, I also want to know that is there any scholarship which your university provide for master courses or PhD courses? Yeah, definitely. Here I have some master student, and the some PhD students. They got fully funded scholarship from the University of Melbourne. So the if you are looking for the scholarships, just go to the your the course program. Just went into that. There you will find the sponsorship or funding. So just check with that particular criteria, and they while you are applying, so there would be the chance for the the opting the funded or scholarship kind of things there. So वहाँ पे आपको मतलब जब अप्लाई करोगे तो वहाँ पे रहता है कि मतलब आपको ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं कि आप मतलब यूनिवर्सिटी का जो फुल्ली फंडेड प्रोग्राम है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसका डेट ऑफ ओपनिंग कब है, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सब वो प्रोग्राम्स जो रहता है उसके बीच में मतलब उसके पीछे दिया हुआ रहता है. And one more Thank you thing, so much. I have to share with you all of you guys. इफ समवन मतलब अगर किसी को लग रहा होगा कि भाई मतलब कि उसका जो एकेडमिक है बहुत ही मतलब जो भी 10वीं या 12वीं तक जो भी पढ़ाई है वो बहुत एक नॉर्मल स्कूल से या बहुत बिलो नॉर्मल स्कूल से हुआ है, तो उसका बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिए. क्योंकि जब मैं 10th का एग्जाम दे रहा था तो मैं रस्टिकेट हुआ था 10th के एग्जाम में. सो आई एम हियर. सो मतलब कि एग्जाम में फेल होना और ड्रीम फॉर द हायर एजुकेशन इट कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज. सो एक चीज है कि मतलब आप जैसे कि आप ग्रेजुएशन में कुछ अगर सब्जेक्ट पैक रह जाते हैं तो आपको अगर ऐसा कुछ फील होता होगा कि मैं मतलब मेरे ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट फील है तो मेरे फर्दर या फॉरेन एजुकेशन पे कोई जिसका असर होगा, तो दैट्स नॉट द थिंग्स. सो डोंट वरी अबाउट दैट. So, Chakshupal, if someone have a less score in their graduation or in post graduation, so how they can they can improve their chances to get admission
in your university? या सो अगर देखा जाए तो अगर आप कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए अगर आप अप्लाई करते हो, अगर वो प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट अगर 60% है, अगर और आपका 55 to 59 के रेंज में है, तो आप मतलब जो प्रोग्राम कोर्स कोऑर्डिनेटर है, आप उसको उससे डायरेक्ट ईमेल थ्रू आप कन्वर्सेशन कीजिए और बोलिए, मतलब बताइए आपके बारे में कि आपका मतलब बहुत इसमें इंटरेस्ट है और आपने ये चीजें हासिल की है, कि मतलब आपका भले ही ओवरऑल आपका परसेंटेज कम हो, बट आपका पर्टिकुलर जो मास्टर में जो मेजर में आप जा रहे हैं, मतलब जैसे स्पेशली अगर बोला जाए कि साइंस, अगर डेटा साइंस में अगर आप आर्टिफिशियल में जा रहे हैं, तो आप बताइए उनको कि भाई जो मतलब कि मेरा जो बैचलर में जो मैंने आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो कुछ भी मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो उसमें मेरा कोर्स जो था वो 80 था, वो 80 था या वो 70 था। तो ये सब चीजें जो है आप ईमेल में या फिर आप अपने रिज्यूमे में जब आप यूनिवर्सिटी को अप्रोच करते हैं, तो ये चीजें जो है वो याद से मतलब हाईलाइट करके भेजिएगा। तो वो एक अलग एक इम्पैक्ट मतलब जो ईमेल रीड करता है उसके ऊपर मतलब होता है कि मतलब हाँ, कि द कैंडिडेट हैज अ लो स्कोर, बट इट हैज अ द गुड कमांड ऑन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये चीजें होती है कि भले ही मतलब यूनिवर्सिटी का रिक्वायरमेंट अगर 60% है, बट यू आर गुड इन द पर्टिकुलर स्पेशलाइज सब्जेक्ट, सो दे विल डेफिनेटली द कंसिडर योर रिक्वेस्ट. And if you are asking about the scholarship, so in the scholarship there is no the consideration for that. You have to eligible for their requirements. If they are asking 60%, so you must have 60%. Okay. Yeah. Thank you, Chakshupal. Yeah. Actually, No. many of our students are much more concerned about this thing, that they don't have a good score in their Yeah. post क्योंकि graduation. मेरे भी So कुछ क्योंकि मेरे भी कुछ दोस्त है जिनके साथ ये सब चीजें अभी भी हो रही है, और वो इस चीजों के साथ कोप अप मतलब कर रहे हैं, कि मतलब अगर जैसे देखा जाए तो उनको 55% है और बिलो 60 है, 55 to 60 के बीच में। अगर इफ दे आर गोइंग विद एन एनओएसएस, सो दे आर नॉट एलिजिबल, बिकॉज दे आर their overall percentage is less than 60%. And if they are going with the government of Maharashtra sponsorship, so they are eligible. But there is the वहाँ पे भी रहता है कि मतलब आपका क्यूएस रैंकिंग अच्छा होना चाहिए, आपकी ये सब चीजें भी मतलब वहाँ पे इवैल्यूएट होती है आपका सिलेक्शन करते वक्त। right. हम्म। So ये मैं जानना था, ये एक और क्वेश्चन था मेरा एक्चुअली। आफ्टर completing your completing masters from in this course which you are doing there, so what is the job opportunities there in Australia? Yeah, it is a very good questions for asking, Rahul bhai. So for the food and packaging, especially food and packaging, so there are the lots of the world global renowned industries or MNCs, I can say, just like as Nestle, Cadbury, and everything which is making food or perfume or everything. मतलब आज की जनरेशन के हिसाब से या आज के वर्ल्ड में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो विदाउट पैकेजिंग सेल होती है, इवन आपका मोबाइल भी। तो हर एक जगह पे पैकेजिंग का मतलब एक स्कोप होता है। आप अगर मोबाइल भी लेंगे तो उसके ऊपर भी पैकेजिंग आता है, उसके ऊपर भी ये सब चीजें आता है। तो विदाउट पैकेजिंग मतलब जो चीजें है वो इनकम्प्लीट है एज माई कंसर्न। तो मैंने कि लास्ट टाइम देखा था कि टेस्ला जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनीज में मानी जाती है, तो इवन टेस्ला भी पैकेजिंग इंजीनियर्स को हायर करते हैं। तो वन ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम RIT, रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, she was from the India. She did his master from RIT USA, and she got placed in Tesla as a packaging engineer. So opportunities है हर जगह पे है, बस ये है कि वो वॉच रखना पड़ता है, कब मतलब नोटिफिकेशंस देखने पड़ते हैं हर जगह पे। और बेस्ट थिंग है कि मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बताया कि if you are doing your master in overseas, so just join with LinkedIn. LinkedIn is a good source of the approach for the work, approach for the job, and all of these things. So LinkedIn profile पे तो
यहाँ पे मतलब कंपल्शन है कि मतलब हर कोई आपको रिकमेंड करेगा कि आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ। Okay, thank you. So, after completing masters from Melbourne, हम्म। so will you get any ये work visa or work visa? Yeah, Will you get work visa? so in Australia, if you are doing your master degree with 2-year courses, so you will get so actually अभी पैंडेमिक जब से लगा है, तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा है, उसका जो टर्म है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। तो आप अगर 2 साल का अगर कोर्स करते हो तो आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा यहाँ पे मिलता है। सो यू कैन स्टे हियर फॉर अप टू 3 years। And it depends if you are living in Melbourne, Sydney, that's the populated or developed cities, so you're getting 3 years. If you're moving to the regional parts just like that, Perth हो गया, एडलेड हो गया, तो ऐसी जगह पे वो 4 या 5 साल का ऐसा भी वीजा मतलब देते हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप मतलब जितने ऑस्ट्रेलिया के जितने बैकवर्ड एरियाज के यूनिवर्सिटी से आप एजुकेशन करते हो, तो आपको पोस्ट वर्ड वीजा में 1 या 2 years का एक्सटेंशन मिलता है। मतलब जैसे मेलबर्न सिडनी से अगर आप कर रहे हो तो आपको 3 साल मिलेगा, पर अगर आप पर्थ से कर रहे हो, एडलेट से कर रहे हो या शेपाटन से कर रहे हो, तो इसमें 4 या 5 साल का ऐसा मतलब पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है। तो तो एक इट डिपेंड्स ऑन। स्टैंडर्ड नहीं है, ये ऊपर नीचे होता रहता हाँ हाँ, ये ऊपर नीचे होता रहता है। है। मिनिमम कुछ क्राइटेरिया होगा, इतना मिनिमम रहता है ऐसा करके कुछ? मिनिमम 2 years, मिनिमम जो 2 years। पैंडेमिक के पहले था, अभी पैंडेमिक के बाद 3 years हो गए। ओके ओके। तो माइट भी हो सकता है कि मतलब पैंडेमिक अगर चला जाए तो वापस से वो 2 साल कर दे, हम्म। है ना। सो फ्रेंड्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। बहुत से लोग हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आप लोगों की तरफ से। हाय गाइस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। आप जैसे चाहें वैसे पूछ सकते हैं। आप हैंड रेज कीजिए, हम अनम्यूट करेंगे आपको, नहीं तो फिर आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अब आप ग्रुप में एकदम नहीं लिखना चाह रहे तो आप पर्सनली भी हमें चैट बॉक्स में टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम आपका हाँ, क्वेश्चन और ले सकते या राहुल ब्रो, यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जस्ट आई क्विकली रिकॉर्ड, हैं। जी जी। कि जो भी बच्चे ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर अप्लाई करते होंगे और उनके पास अगर ट्रांसक्रिप्ट नहीं होगा, तो आई बिलीव दैट देर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द ट्रांसक्रिप्ट, योर मार्कशीट इज फाइन विद द फॉर द एप्लीकेशन। तो क्योंकि मैं भी जिस वक्त अप्लाई करता था, तो मैं भी मतलब ट्रांसक्रिप्ट के लिए अप्लाई किया था, तो एक एक मार्कशीट का वो 550 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ में वो चार्ज करते थे। तो इट्स बेटर कि मतलब आप अपने यूनिवर्सिटी से मतलब स्पेशली आप ऑस्ट्रेलिया अगर आ रहे हो, तो आप अपने ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी को आप अपनी मार्कशीट भेज के भी आप मतलब आप अपनी एप्लीकेशन फुलफिल कर सकते हैं। तो वहाँ पे कुछ ट्रांसक्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है, कि मतलब आप वो खर्चा जो है बचा सकते हैं। बढ़िया, ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दे दिया आप। हाँ, क्योंकि आई ऑलरेडी ऑलमोस्ट मैंने भी 3,500 इन्वेस्ट किया, पर कुछ भी यूज़ नहीं हुआ, मेरे मार्कशीट पे ही काम चला है। तो हाँ हाँ। वो चीज़ है यहाँ पे। राइट राइट राइट। और ये हाँ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए अगर कोई मान लीजिए इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, तो उनका हम्म। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन का अगर सर्टिफिकेट लगाए या तो वो भी कंसीडर हो सकता है या ये एग्जैक्टली। आइल्स इंग्लिश प्रोफिशिएंसी या टेस्ट के बदले में? या it is a very nice questions, and I believe that the all of the the students who have joined here, just listen it. It will also save your some IELTS preparation and PT cost also. तो बेसिकली अगर देखा जाए, तो जब मैं मेलबर्न यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहा था, तो यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट में एक चीज वहाँ पे उन्होंने मेंशन की थी। आप जिस वक्त पे आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, उस वक्त से लेकर आपका जो एजुकेशन है, मतलब आपका जो बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री है, वो विद इन 5 years अगर वो कंप्लीट हो रही है, तो देर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। मतलब आपको पीटीपी की भी जरूरत नहीं है, आपको आईएलटीएस की भी जरूरत नहीं है, आपको टॉफेल की भी जरूरत नहीं है। अगर आप अप्लीकेशन करते वक्त आप अगर 5 साल के पहले अगर ग्रेजुएशन हुए, तब आपको फिर पीटी, आईएलटीएस या टॉफेल लगेगी, जो कि मुझे देनी पड़ी। पर मेरे कुछ दोस्त है जिनको मतलब वो नहीं लगी थी। तो ये एक
क्राइटेरिया रहता है यूनिवर्सिटी में. So make sure when you are applying, so just go with that or just ask to the academic team of the concerned university. It is better. Thank you, Chakshupal bhai. So we have one more question in our chat box. So Plus is asking, does age has any impact on student visa application? पलाश भाई, ऐसा तो कुछ है नहीं. मतलब अगर आपको स्टडी करना है तो आप जैसे कि अगर आप फंडेड हो या फिर और एजेंसी के मतलब आप खुद होके आ रहे हो या फिर आप स्पॉन्सरशिप के देख रहे हो, तो इसके ऊपर आप डिपेंड करता है. इफ यू आर अप्लाइंग हियर ऑन द स्पॉन्सरशिप, सो योर एज मस्ट बी बिलो फॉर 35 years फॉर द मास्टर एंड फॉर PhD 40 years. सो इट डजेंट इम्पैक्ट ऑन योर एज. हाँ, पर कुछ रहता है कि मतलब आपको अगर फर्दर सेटलिंग या फिर सेटलमेंट का अगर है तो कुछ मार्किंग क्राइटेरिया रहते हैं, बट इट डजेंट मैटर. तो थोड़ा आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी बताइए, आपका कैसा कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद में. आप ओके कैसा ओके फील ओके. कर रहे हैं, क्या डिफरेंसेस फील कर रहे हैं वहाँ के एकेडमिक लाइफ में और यहाँ के एकेडमिक लाइफ में? हाँ, तो मैं जैसे कि यहाँ पे मेलबर्न में आया था मैं 22nd को. तो मेरा जो कॉलेज स्टार्ट हो रहा था वो 28/6 चालू हो रहा था. तो जैसे मैं यहाँ पे आया था तो ऑब्वियसली वी डोंट हैव एनी इंग्लिश बैकग्राउंड. अपन इंडिया में भी जाता कुछ इंग्लिश में बात नहीं करते, तो ऑब्वियसली वो तो चीज़ यहाँ पे मतलब आपको फेस करनी पड़ेगी ऑलमोस्ट. जैसे कि मतलब जिनका अगर बैकग्राउंड इंग्लिश से ना है तो वो सब चीज़ें फेस करनी पड़ेगी. और जब यूनिवर्सिटी जब स्टार्ट होता है तो बहुत से अपने भाई बहन लोग रहते हैं, उनको असाइनमेंट राइटिंग, रेफरेंसेस, इंटेक्स साइटेशन, ये सब चीज़ें जो है अपन कभी इंडिया में कभी किए नहीं रहते ये सब चीज़ें. तो यहाँ पे बहुत उनका जो स्टैंडर्ड रहता है वो बहुत हाई रहता है. अगर आप उस स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं चले तो सीधा वो आपका मार्किंग क्राइटेरिया वो लेस कर डालते हैं. तो ये सब चीज़ें थोड़ा कोप अप होने में लिए थोड़ा समय लगता है. थोड़ा मतलब आता है, मतलब इंसान को लगता है कि यार ये सब चीज़ें नहीं जम रही है. बट ये चीज़ें कोप अप करने के लिए यूनिवर्सिटी के बाद बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, उनके क्लासेस चलते हैं, उनके कुछ वीडियोस रहते हैं कि जैसे मैंने राहुल भाई को बताया कि मतलब उनके कुछ अकेडमिक ट्यूटोरियल्स रहते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दी असाइनमेंट, मतलब रेफरेंसेस कैसे करना है या फिर प्रिपरेशंस कैसे करना है, राइटिंग कैसे लिखना है, असाइनमेंट राइटिंग कैसे लिखना है, रिपोर्ट कैसे राइटिंग लिखना है. तो ये सब उनके सेशंस रहते हैं. तो या फिर अगर स्पेशली अगर मेलबर्न के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो आप गूगल पे एकेडमिक स्किल्स करके एक उनका यूट्यूब का एक चैनल है. तो आप वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि मतलब ईच एंड एवरीथिंग दे हैव ब्रीफली एक्सप्लेन. मतलब कि इंटेक्स साइटेशंस कैसा होना चाहिए, इंट्रोडक्शंस कैसा होना चाहिए, स्टार्टिंग लाइन कैसी होना चाहिए, स्टार्ट कैसे करना चाहिए, कंक्लूजन कैसे करना चाहिए. तो बहुत ही मतलब ये जो चीज़ें ना बहुत ही हेल्पफुल करेगी. आप अगर बिफोर कमिंग हियर यू मस्ट गो विद दैट. मतलब वो सब चीज़ें तो मैं आपको डेलिबरेटली बोलूंगा कि आप प्लीज़ वो चीज़ें मतलब एटलीस्ट वो चीज़ें मतलब देख के आइए वहाँ से. तो यहाँ पे आने के बाद आपको अकेडमिक अकेडमिक के साथ एक अलग स्ट्रगल करना पड़ता है और बाकी चीज़ों के साथ अलग स्ट्रगल करना पड़ता है. तो ये नहीं करना पड़ेगा आपको, सिर्फ थोड़ा आपके अकेडमिक के ऊपर ही ध्यान देने के लिए बहुत सारा अच्छा समय और अच्छा मतलब प्रिपरेशन के लिए आपको समय मिलेगा. तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा. थैंक यू चक्षुपाल भाई. सो हाँ, या श्योर श्योर, आई विल सेंड. अलका, आई विल डेफिनेटली शेयर दैट लिंक विद. I will share all the important links to Rahul Bhai if you are okay with that, or if you need now, so I will have to go for that. Just let me.
मैंने अभी चैट बॉक्स में एक एकेडमिक स्किल के एक लिंक शेयर की है, तो आई थिंक द क्वेश्चन वाज फ्रॉम अलका, so you just can click on that link and you will get the content of what you're looking for. So Plus is also asking that what is the approx cost for master's degree in Australia, including living expenses. So he's asking about the cost of master's degree in Australia. Okay, so Palash, it depends on the university which you are applying. So if the question is related to University of Melbourne, so it approximately cost around 24,000 Australian dollar per semester for master degree. And for living expenses in especially in Melbourne, so it depends on where you are living. मतलब अगर आपको बहुत ही स्पेशियस और अच्छे खासे माहौल में रहना है तो you will have to pay more. अगर आपको थोड़ा सा बजट में रहना है तो वैसे ऑप्शंस यहाँ पे रहते हैं. So it depends on you कि आपको मतलब यूनिवर्सिटी के पास चाहिए. अगर आपको थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के 15 to 20 मिनट्स के ट्रैवल ड्यूरेशन पे चाहिए तो आपको रूम्स थोड़े मतलब एकोमोडेशन जो एक्सपेंसेस है थोड़े कम रहते हैं. आपको अगर यूनिवर्सिटी के नज़दीक में अगर आप रहना चाहते हो तो आपको कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा. अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूँ तो अभी मैं फ़िलहाल में यूनिवर्सिटी के नियर बाय रहता हूँ, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे 2 से 4 मिनट के डिस्टेंस में रहता हूँ. तो यहाँ पे अराउंड हम 420 ऑस्ट्रेलियन डॉलर देते 2 लोग एक वीक का. $420 एक वीक का 2 लोग देते हैं. अगर यही आप अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी से 15 मिनट के ट्रैवल ड्यूरेशन पे देखना चाहो तो इट्स कॉस्ट अराउंड यू $150-160 पर या 150 और 160 फॉर 2 पर्सन. तो ये डिफरेंस आता है. पर यही कि मतलब मेरा सजेशंस तो आप लोगों के लिए यही रहेगा जो न्यू कमर्स है कि आप जब भी कोई भी यूनिवर्सिटी जाओ तो नियर बाय यूनिवर्सिटी रहो. तो आपको लाइब्रेरी के जो एक्सेस है या फिर बहुत सी लेक्चर कैप्चर करना है या फिर और कुछ प्रैक्टिकल के लिए जाना है तो बहुत समय बहुत बच जाता है और बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो है एक्सेस कर पाते हो आप. कुछ इवेंट से या और कुछ प्रोग्राम से तो आप इजीली एक्सेस कर पाते हो और आपको ट्रांसपोर्टेशन का जो एक्सपेंसेस है वो आपको बियर नहीं करना पड़ेगा. Thank you, Chakshupal bhai. Yeah. Anyone have any question or queries, please ask. जब तक ये पूछते हैं तो मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर मान लीजिए ये आप मैं ये जानना चाह रहा था कि अपने स्टूडेंट्स को बताइए कि एप्लीकेशंस के दौरान क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों का उनको स्पेसिफिकली दे शुड कंसीडर दैट दीज मिस्टेक्स दे शुड नॉट डू. ओके. सो जैसे कि मतलब जैसे कि अपन ओवरसीज स्टडी के लिए अपन अप्लाई करते हैं तो बेसिकली एसओपी लगता है. एसओपी के बाद में फिर एलओआर लगता है. कुछ यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्ट का रिक्वायरमेंट रहता है या फिर लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस भी चीज रहते हैं. तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस जो है तो डिपेंड्स वैरी करता है कि मतलब विच यूनिवर्सिटी और अप्लाई. सो जस्ट अगर मैं बात करना चाहूँ द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न पे तो यहाँ पे कुछ दोस्त लोग हैं जो डेटा साइंस कर रहे हैं, डेटा साइंस से मास्टर, पर उनके कोर्स के लिए एलओआर लगता ही नहीं है. तो या मतलब डेटा साइंस जो कोर्स है उसके लिए भी मतलब ये यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके. तो ये सब चीज़ें भी रहती है कि मतलब अपन बहुत अपना समय अपन इन्वेस्ट करते हैं कि एलओआर बनाने के लिए. हालांकि मैंने भी किया था पर उसका कुछ यूज़ ही नहीं हुआ. तो वो सब चीज़ें रहती है कि मतलब आप यूनिवर्सिटी कौन सी अप्लाई करते हो उसका रिक्वायरमेंट क्या है. बट कुछ कुछ यूनिवर्सिटी रहते हैं उनका स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस या रिक्वायरमेंट्स रहता है कि उनको एलओआर चाहिए. तो बेसिकली अगर एसओपी के बारे में है तो एसओपी के बारे में जनरली भाई आपका फर्स्ट पैरा में इंट्रोडक्शन दीजिए आपका कि आपका कुछ वर्क एक्स होगा तो वर्क एक्सपीरियंस दीजिए. जैसे कि मैंने आज ही एक सेशंस करियर्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी लिया था यूनिवर्सिटी से, तो उन्होंने आज कुछ अच्छे कंटेंट बताए. अगर समय हो तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो. प्लीज. तो उन्होंने ये बताया कि जैसे आप रिज्यूमे जैसे लिखते हो तो या फिर कवर लेटर आप लिखते हो. कवर लेटर एज अ काइंड ऑफ एक प्रकार का एसओपी होता है. तो आप जब लिखते हो तो आप अपने नाम से स्टार्ट कीजिए, आप जहाँ से पढ़े वो स्टार्ट कीजिए,
फिर आप का इंट्रोडक्शन लिख लेंगे, मतलब आपका जो आपने डिग्री ली है वो डिग्री में आपने क्या क्या पढ़े। ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। सेकंड पैराग्राफ में आप मेंशन कीजिए कि आप उस डिग्री में क्या क्या अचीवमेंट्स, क्या अवार्ड्स, या कुछ ऐसे एक्टिविटीज किए जो आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, उसका एक लिंक बने या उसकी एक वेटेज बने। तो ये सेकंड पैराग्राफ में होना। और थर्ड पैराग्राफ जो है वो एज अ वो कंक्लूजन पार्ट रहता है, तो जो फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ है उसको आप कंक्लूड कीजिए। बस इतनी सी रिक्वायरमेंट्स रहती है। और उन्होंने बोला कि देर इज नो बिग रिक्वायरमेंट दैट कि योर रिज्यूमे, कवर लेटर और काइंड ऑफ मीन्स फॉर एग्जाम्पल एसओपी की आपका इतना ही वर्ड का होना, इतना ही वर्ड का होना, ये सब चीजें मतलब वो नहीं देखते, वो स्पेसिफिक देखते हैं। मतलब उनको जो रिक्वायर्ड है आपने वो लिखा, मतलब तो वो सफिशिएंट है उनको, मतलब आपको एलिजिबिलिटी करने के लिए, मतलब आपको एलिजिबल करने के लिए। So we have a question from Plus. So he's asking, he's saying, I have a 7 CGPA in BTech and 6 months of experience in IT. Should I consider my options for applying to group of 8 university as I have very low CGPA? Yeah. So Palash, as I believe, 7 CGPA is equal to 70%. If I'm not wrong, then can you please respond? Because I did my bachelor's in percentages, so it's 65. Yeah. So you're eligible. Yeah, you're eligible. Because one of my friend is doing his master in University of Melbourne, which is in a group 8, and she has the same criteria, 60 to 65, and she is doing here. So obviously you are eligible, don't worry about that. And for the group 8, so I know that you know about the group 8 universities. So the most of the university have the same criteria. Your eligibility should be from 60 to 75 as kind of thing. So you are actually fit into that. If you're talking about especially in the University of Melbourne, so yes, you are. तो राहुल भाई, इस पे भी एक है कि मतलब जैसे कि जो भी कोर्सेस है, मतलब जैसे कि पलाश का एक था कि उसको आईटी में आना है, और अगर उसे यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में आना है, तो इट डिपेंड्स कि मतलब वो कोर्सेज के लिए नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितने हैं, ये भी एक बात होती है। नंबर ऑफ एप्लीकेशन। अगर पलाश का सीजीपीए है 65, सॉरी परसेंटेज है 65, और उसको एक्सपीरियंस है 6 महीने का, और नंबर ऑफ एप्लीकेशन जैसे उनका इंटेक रहता है 30 का, अगर 30 सीट्स में अगर पलाश से आगे, मतलब पलाश के पहले अगर समझो जो भी कैंडिडेट्स है, अगर उनका सीजीपीए ज्यादा है, मतलब 70 है, मतलब सॉरी 7.5 है, 8 है, और उनको वर्क एक्स ज्यादा है, तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी जो जिनका प्रोफाइल, सॉरी टू से दिस वर्ड टू पलाश, पर आपके प्रोफाइल से अगर थोड़ा अगर उनको हटके या कुछ उन्होंने उसने अगर रिज्यूमे में या फिर सॉरी एसओपी में ऐसे कुछ मेंशंस अचीवमेंट्स अगर किए होंगे, तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी उनको प्रेफरेंस देगी। तो ये बात भी कंसिडरेबल है कि मतलब कि नंबर ऑफ वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स कितना है पर्टिकुलर फील्ड में। तो ये भी एक चीज होती है, आपका प्रोफाइल जब इवैल्यूएट होता है तब। Right. Thank you. So anyone else have any question? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज। तो तब तक ये कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको कुछ लगता है चक्षुपाल भाई के कुछ ऐड करना चाहिए या बताना चाहिए, स्टूडेंट्स को हेल्पफुल होगा, तो आप अपनी तरफ से भी बता सकते हैं। हाँ, जरूर। अगर स्पेशली अगर कुछ अपने नालंदा एकेडमी से है, या फिर और कोई स्टूडेंट है जो यहाँ पे अगर स्पेशली अगर ऑस्ट्रेलिया में या मेलबर्न में अगर फिर इंटरनेशनल बिजनेस के करने के लिए आ रहे होंगे, तो यहाँ पे आने के लिए पहले थोड़ा मतलब जो असाइनमेंट का राइटिंग का जो स्किल्स है वो थोड़ा मतलब देखिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कि मतलब असाइनमेंट लिखते कैसा है, असाइनमेंट राइटिंग होती क्या है, इंट्रोडक्शंस होता क्या है, प्लेगरिज्म ये चीज होती क्या है, प्लेगरिज्म आने के लिए अपन मतलब जो ऑथर्स के जो कंटेंट है उसको अपन कैसे रिफ्रेश करके लिखे, ये सब चीजें मतलब थोड़ा प्लीज थोड़ा मतलब सीख के आए। और
स्पेशली अगर हम इंजीनियरिंग सेक्शंस की अगर बात किया जाए, तो जैसे कि अगर कुछ लोग हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से यहाँ पे अगर बैचलर मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ है और यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए आए हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश ये रहेगी कि कुछ जैसे कुछ फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे देखा जाए कि जैसे मैटलैब कोर्सेस है, या फिर और ऐसे कुछ करस्पॉन्डिंग कोर्सेज है जो उनके फर्दर करियर के लिए मतलब या फिर एकेडमिक करियर में जैसे इंक्लूड हो, तो आप थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक वहाँ से करके आए तो बहुत ही बेटर रहता है, कि क्योंकि यहाँ पे एक एकेडमिक का स्ट्रेस बहुत अलग लेवल पे रहता है, और आपको कोई कोर्सेस या फिर एक स्किल्स नहीं आए तो वो उसके साथ कोप अप करना और एक अलग चीज हो जाती है, तो दोनों चीज थोड़ा मैनेज कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट जाता है, तो उसके वजह से बहुत कुछ मतलब थोड़ा स्ट्रेस या कुछ एंग्जाइटी मतलब फील होती है बच्चों को। जैसे कि मतलब मुझे तो मतलब ऑब्वियसली मैं जब ग्रेजुएशन किया था तो रेफरेंसेस ये सब चीज़ें नहीं थी, तो मैंने भी मतलब ये चीज़ में बहुत मतलब थोड़ा स्ट्रेसफुल रहा है मेरा भी जर्नी। तो उसके लिए बहुत मतलब जैसे कि 3 महीने का एक सेमेस्टर रहता है, तो उसमें 1 1.5 महीना तो वो सब सीखने के लिए ही जाता है। तो ये चीज़ें अपन प्रिवेंट कर सकते हैं कि मतलब यहाँ पे आने के पहले थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें अगर अपन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे या जो मैंने लिंक शेयर किए है वो फ्री है, तो वहाँ पे एक्सेस करके ये सब चीज़ें आप थोड़ा देख सकते हैं। या फिर कोई फिर कुछ प्लेटफॉर्म है जैसे कोर्सेरा या ईडीएक्स है, ऐसे प्लेटफॉर्म पे भी आप कुछ फ्री कोर्सेस है, या फिर एनपीटीएल है, शायद मैंने भी एक एनपीटीएल का कोर्स किया था या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ये भी मतलब अच्छे प्लेटफॉर्म है, बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जो आपको एक अच्छा मतलब यहाँ पे आने के पहले आपको एक प्रिपेयर करने के लिए आपको बहुत हेल्प होगा। और वो मैक्सिमम एनपीटीएल के जो भी चैनल मतलब जो भी कोऑर्डिनेटर रहते हैं वो ऑब्वियसली एक प्रीमियर यूनिवर्सिटी से रहते हैं, आईआईटी से रहते हैं, तो एक वो एक अलग लेवल का एक थोड़ा एकेडमिक करिकुलम आपको मिलेगा और आपके सीवी में भी ऐड होगा। राइट, थैंक यू। तो अभी कोई क्वेश्चन है किसी का तो आप पूछ सकते हैं, हम क्वेश्चन ले सकते हैं, लास्ट 2 3 क्वेश्चन एटलीस्ट हम ले सकते हैं अभी, सो वी हैव सम टाइम टू टेक योर क्वेश्चंस, सो प्लीज या आस्क। अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो या फिर चैट बॉक्स में आप राइट कर सकते हो। राइट राइट। डोंट हेजिटेट, अगर आप अभी हेजिटेट हो गए तो फिर बाद में आपको दिक्कत होगी, इट्स बेटर टू आस्क ना। प्लीज फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चन। या ये ज्योतिराव हमारे भाई बोल रहे हैं पूछो पूछो, ये चक्षुपाल के भाई हैं, आने वाले दिनों में इनका भी हम सेशन रखने वाले हैं, तो ये बोल रहे हैं आपको इंस्पायर कर रहे हैं पूछने के लिए, अगर जो भी क्वेश्चन आप प्लीज फील फ्री होके पूछिए। एसओपी और एलआर के बारे में अगर कोई अपने बच्चों लोगों को कुछ अगर दिक्कत जाती होगी तो मतलब कैसा लिखना चाहिए, ड्राफ्ट कैसा लिखना चाहिए, तो कुछ गूगल पे कुछ टेम्पलेट्स अवेलेबल है फ्री ओके। ऑफ कॉस्ट में, तो आप टेम्पलेट यूज करते हो डेफिनेटली आपको एक ड्राफ्ट स्ट्रक्चर आपको एक प्रोवाइड करेगा कि हाउ टू एक्चुअली स्टार्ट दी राइटिंग एंड राइटिंग अ रिज्यूमे और राइटिंग योर एलओआर काइंड ऑफ थिंग्स। So Palaj Bhai का question है, does Australia provide ample of PR opportunities? So Palaj Bhai, the question is regarding the settlement. Okay, so it depends on कि आप कौन से फील्ड्स से ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर आप कौन से फील्ड से आ रहे हो। जैसे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जो है उसमें बहुत ही हैवी स्कोप है, बहुत ही हैवी स्कोप है, तो ऑब्वियसली जो बच्चे लोग हैं सिविल इंजीनियरिंग करके आते हैं या फिर यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट जो कोर्स करते हैं, तो उनके लिए जो पीआर के चांसेस है बहुत हाई लेवल पे जाते हैं। और एक अगर मास्टर और बैचलर, अगर मास्टर और पीएचडी छोड़ के अगर कुछ अगर ऐसे भी कोर्सेस है जहाँ पे एम्पल ऑफ पीआर अपॉर्चुनिटीज है, जस्ट लाइक दैट कुकरीज, जैसे अपने यहाँ पे बोलते हैं अपन पॉलिटेक्निक में जैसे कि अपन बोलते हैं कि होटल मैनेजमेंट जैसे कोर्स करते हैं अपन 2 3 साल का डिप्लोमा, सॉरी आईटीआर जो अपने यहाँ पे बोलते हैं, तो यहाँ पे उनको डिप्लोमा कोर्सेज बोलते हैं, तो कुकरीज होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिशियंस होता है, यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स होता है, तो
ये वाले कोर्सेज से भी मतलब जहाँ तक कि मैंने जिन लोगों के साथ मेरा अभी तक मतलब कांटेक्ट हुआ है, तो मैक्सिमम जो लोगों का तो कहना यही कि मतलब भाई कि कुछ भी जैसे ITI बेस के यहाँ पे कोर्सेज रहते हैं, वो कोर्सेज करने के लिए आ जाओ, बहुत ही अबंडेंस अपॉर्चुनिटीज रहती है। एक वन ऑफ माय फ्रेंड है कि उसने 2019 में यहाँ पे आया, कुकरीज किया, 2 साल का कुकरीज बोले तो इन शॉर्ट होटल मैनेजमेंट का ITI यहाँ पे। तो 2 साल 2019 से 2021 तक उसका कोर्स था। उसके बाद में उसने 1 साल इंटर्नशिप की, उसके बाद में उसको 2023 में उसको PR मिला। तो ये भी चीज होती है, और उसका फीस भी बहुत कम रहता है। ग्रेट। आप लोगों को भी किसी को कुछ करना है ऐसे तो आप कर सकते हो। Yeah, so Palash, you are from computer science field. Yeah, obviously, computer science aspirants are always welcome. बहुत 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 रिक्वायरमेंट है। तो अभी हम, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन नहीं है तो अभी हम वाइंड अप करना जा रहे हैं। So I want to thank Chakshupal bhai for giving your precious time to us and Yeah. sharing your experience and your knowledge with our students. So thank you so much for attending our session and accepting our invite. Thank you, thank you. I would like to also thank you, Nalanda, for offering me such a text to share my experience. Thank you, Rahul bhai. Thank you, Anup Sarji, Jai Bhim, all of you, and all of you on the team. Thank you. Thank you, Chakshupal bhai. Bye. Bye bye. Jai Bhim to all.